Good afternoon, everyone. So, in the last class, we have completed the complete your A's, right? A's we have done almost everything, fine adaptation, migration, and all, right? So, significances we have almost done. Ki kya hai significances? Navigation we have talked about. What is the concept of the navigation? That means navigation is a method through which they do migrate. Navigation through which they actually recognize that what are that kind of recognizable things with the help of that sun's direction and whatever the artificial and natural methods through which they recognize the pattern, because migration, as according to the Cohen, it's a repetitive process from one place to another. Okay, so we are going to start up the chordate. इनमें chordate में we are going to write about that mammals. अच्छा, one more thing, mammals का थोड़ा syllabus is a little broad. Good afternoon, guys. So the syllabus of the mammals is little broader. Okay, so there's so many things. पहली बात तो simple classification of the mammals. So when we talk about the general characteristics, today we are going to talk about then classification. Then in the classification, we mainly classify the three things. That is prototheria, metatheria, and eutheria. Eutheria are your real or the true animals. As we talk about the eutheria, here is actually the multiple division. जैसे कि some of them are also aquatic mammals, like those mammals who live in that water, and some of the flying mammals. तो इन पे आपके शॉर्ट नोट्स भी आ रखे हैं, ठीक है. And that is important, of course. Suppose that if I'm talking about, you can write some kind of modification. So we'll talk about this. After this, there's a very discussed broad big topic, that is your comparative anatomy. ठीक है, सिलेबस इसलिए बता रही हूँ. सो अकॉर्डिंगली यू विल गेट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट. सो कंपैरेटिव एनाटॉमी में आपको ऑलमोस्ट सब कुछ है. कंपैरेटिव एनाटॉमी में आपका स्टार्ट विद दैट इंटेगुमेंट्री, देन डाइजेशन, देन रेस्पिरेशन, देन सर्कुलेशन, देन हार्ट एंड आयोटिक सिस्टम अलग से है, देन एक्सक्रीशन एंड ऑल, रिप्रोडक्शन, एवरीथिंग है. But when I'll show the questions or the PYQs, there is only two thing important. The one is a very most important, the most important is your digestive system. Comparative anatomy of digestive system of vertebrates. और आफ्टर दैट इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है आपका वो है सर्कुलेटरी सिस्टम, और विद द डेवलपमेंट ऑफ हार्ट विद रिस्पेक्ट टू द आर्क सिस्टम. ठीक है, इतने सारे जो भी आपके वॉट एवर द फिजियोलॉजिकल फंक्शन होते हैं, इन दोनों में ये इंपॉर्टेंट है. उसके बाद द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर, नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट आई विल से, इंटेगुमेंट. बहुत फ्रीक्वेंटली, जैसे कि सपोज दैट इफ द 10 क्वेश्चन केम फ्रॉम दैट कंपैरेटिव एनाटॉमी, तो 7 टाइम्स डाइजेस्टिव, लाइक 6 टाइम डाइजेस्टिव पूछा गया होगा, 3 टाइम्स आपका सर्कुलेटरी पूछा गया होगा, एंड 1 टाइम द क्वेश्चन इज फ्रॉम दैट इंटेगुमेंट्री. इंटेगुमेंट्री मींस द अपर वाला स्किल, लाइक एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस. ठीक है, इसके जो भी आपके, जैसे कि इंटेगुमेंट्री वी टॉक अबाउट दैट स्केल्स बन जाते हैं, फेदर्स बन जाते हैं, हूव्स बन जाते हैं, राइट, दिस काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन. आफ्टर दैट आपके इसमें, सो वी विल नॉट गोइंग टू कंप्लीट, जब कभी भी नहीं पूछा गया है, सो आई विल जस्ट कंप्लीट आपका डाइजेस्टिव एंड सर्कुलेटरी. इंटेगुमेंट्री भी शॉर्ट नोट कराएंगे, बिकॉज एक से 1 to 2 टाइम इट हैज बीन आस्क्ड, एक्सेप्ट दैट आपका 3-4 सिस्टम एंड एवरीथिंग रेस्पिरेटरी. जैसे कि सपोज दैट एक्सक्रीटरी है, तो यू विल राइट दैट व्हेन वी गोइंग टू टॉक अबाउट दैट फिजियोलॉजी में सेकंड पेपर में टॉक अबाउट दैट एक्सक्रीशन. We will talk about the mesonephric, metanephric on the basis of that nitrogenous products, nitrogenous based excretory product. Animals are divided into monotelic, uricotelic, and urotelic. But never ever been asked, not even the 6 to 7 year, but also the 10 year. I'll show this, I'll give the proof too. ठीक है, तो हम लोग ये दोनों करेंगे, ये भी करेंगे आज. If this will be complete, we'll start with that. Another thing about the chordate, why I'm saying that in the starting only, आपका ना इसमें वो है, क्या कहते हैं, ग्लैंड्स है. यस, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं आप में. एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आपकी सारी ग्लैंड्स आती हैं. सो वी कैन डू वन थिंग, वी कैन कवर हियर आल्सो. syllabus is same. Endocrine glands, either you are completing in your paper 1 or you are completing in paper 2. The syllabus will not going to change. But better I'm thinking, because वहां पे भी आपकी ग्लैंड है और वहां पे हार्मोनल फंक्शंस भी है. ठीक है, तो सेम थिंग यहाँ पे, ये टॉपिक छोड़ के लास्ट बैच में भी वी हैव डन द सेम थिंग. ये टॉपिक यहाँ ना करके हम लोग वहां करेंगे, बिकॉज देयर वी हैव टू, क्योंकि व्हाई वी आर डूइंग देयर, बिकॉज वी विल टॉक अबाउट द कंप्लीट फिजियोलॉजी. सपोज दैट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स व्हिच आर यूजफुल इन द डाइजेशन, तो यहाँ पे अननेसेसरी इसका नोट्स हो जाएगा. द थिंग इज, यू शुड हैव द नोट्स एंड यू शुड हैव द कांसेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, राइट. सो यू विल हैव दैट काइंड ऑफ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड द नोट्स इन योर पेपर 2. ऑब्वियसली जब आप पेपर देने जाओगे मेंस का, तो आप पूरा रिवीजन करके ही जाओगे ना. ऐसा तो नहीं है कि इन दैट रिमेनिंग 2 hours यू आर गोइंग टू कवर द सिलेबस ऑफ पेपर 2. दैट इज नॉट द टॉपिक, राइट.
So this topic of the endocrine glands we will cover in the paper 2. Except that everything we are going to cover in paper 1. Even I can left, but digestive system का उसमें process, उसमें physiology है. यहाँ पे there's a comparative anatomy है, the development, the evolution of that. That is why we are going to cover it here. ठीक है? Circulation का यहाँ पे development, half का यहाँ पे evolution है. That's why we are going to cover here. The physiology thing we are going to cover in that physiology. Any problem about that? एक ही topic छोड़ रहे हैं, endocrine, and except यहाँ पे जो छोड़ रहे हैं वो that is not relevant. If I'll feel it, then I'll give the PDF. Not feel it, but of course I'll give the PDF of that because that is not at all relevant. कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा है. I am telling you. Unnecessary time waste करके नोट्स करने का कोई मतलब नहीं है. Okay, everyone? आशा, राजकुमार, रोहित, क्या बात है? मतलब जब ये आप आओगे तो वो नहीं आएंगे? Okay, fine. So make the heading chordate, mammals, general characteristics. Chordate, mammals. सिर्फ हेडिंग डालो chordate, mammal. Right on. The word mammalia, the word mammalia has derived from the term mammy. Has derived from the term mammy, which means type of gland which produces milk and shows one of the higher characteristic feature for the development of child slash human species in the evolutionary process. Next, make the heading general characteristics. Make the heading general. This thing you can write in the introduction. That's it. Okay? General characteristics. They are terrestrial. They are mostly terrestrial. And some are aquatic. With specific adaptation in habitat. Next, air breathing, warm blooded slash homeothermal, tetrapod vertebrates, having broad range of temperature tolerance, with the ability of maintaining its internal body temperature in
external changing environment, in external changing environment, due to the process of due to the process of homeostasis, homeostasis, body distinctly divisible. Next point, body distinctly divisible into, body distinctly divisible into head, neck, trunk and tail, head, neck, trunk and tail. Next point, their skin is covered with, their skin is covered with epidermal hairs, epidermal hairs, which acts as insulating air, which acts as insulating air and allows the body to maintain temperature, and allows the body to maintain the temperature. Next point, exoskeleton includes, exoskeleton includes lifeless, exoskeleton includes various modifications of of the integuments, of the integuments as their derivatives, as their derivatives, as horns, spines, horns, spines, scales, claws, nails, horns, spines, scales, claws, nails, hoof, hoof, dermal plates, etc. Next, skin richly glandular, skin richly glandular, mainly consist, mainly consist two glands, mainly consist two glands. First, pseudorific, pseudorific gland, एंड pseudorific की बात थोड़ा सा लिखना है, sebaceous gland, we'll write about both, sebaceous gland, pseudorific gland and sebaceous gland. pseudorific में लिखो, it produces sweat, it produces sweat and controls body temperature, and controls body temperature. Next, sebaceous में लिखो, it produces oily secretion, it produces oily secretion. जैसे कि we have the root hairs, है ना, this is one of the very common thing, we must have seen that in the root hairs, है ना, after like washing of the head, after some time we feel a very sticky kind of, है ना, a kind of so some people have said no कि they have a very oily skin, so that is the sebaceous gland which produce the oily secretion. ठीक है, write down, produces oily secretion and makes epidermal hair and skin, and made epidermal hair and skin water resistance, water resistance, water resistance. Here next point में actually लिखना है, listen,
So sebaceous gland, sebaceous, वैसे भी sebaceous is a kind of that oily secretion. So जो आपकी mammy है, that is a gland which produces a milk. Milk is a different kind of product. So milk, mammy is actually modification of the pseudorifid gland. ठीक है, which produces the milk. Next point में write it down. Modified pseudorifid gland. Next point, modified pseudorifid gland forms the mammy, forms the mammy slash mammary glands, mammary glands, which is a characteristic feature, which is a characteristic feature of mammalia, of mammalia. Hello everyone, all of you are student of Zoology optional. Gargi, Tamanna, Kajal. Ma'am, this is supposed to be our psychology optional class. Therefore, we have joined this. Okay, no, actually, this is your Zoology optional class. So I think you guys have, I think, a wrong link. Let me talk. This is not the psychology optional. This is a Zoology optional. Okay. Okay, ma'am. सूरज का है? हाँ, जूलॉजी की क्लास में साइकोलॉजी ऑप्शनल से बच्चे हैं. Give me just 1 minute, okay, guys? I'll say that they have the shared. No issues. I'm just telling you if there is any psychology class, so they'll give the link to you guys. Just a minute. साइकोलॉजी के बच्चे क्यों बात कर रहे हैं? अलग लिंक भेजिए. कौन इसमें से कौन है काजल, तमन्ना. Okay, okay, fine, Rajkumar. Thank you. अभी आ रही है राजकुमार? Now I think audible. Okay, thank you. Actually, the class name was wrong. That's why this was the confusion. चलो, ready on? क्या लिखा लास्ट में? Mammy, yeah, which is a characteristic feature of mammalia, through which they produces, through which the females produces the milk, through which the females produce the milk for nourishment of young ones, for nourishment of young ones, just after birth, just after birth. Next, endoskeleton. Next point, endoskeleton thoroughly ossified, proper bones का endoskeleton thoroughly ossified. Next point, there is an external ear or pinna is present. There is an मत लिखना. There is external ear or pinna is present. Is present.
with external auditory meatus, with external auditory meatus, which with an addition to, in addition to, internal and middle ear, Next point. Alimentary canal terminates by anus. Next point. Alimentary canal terminates by anus, comma, there being no cloaca, इसमें लिखो, buccal cavity separated from nasal passage, buccal cavity separated from nasal passage, by a hard palate, formed by premaxilla, maxilla and palatine, formed by premaxilla, maxilla, that is your upper jaw wali bone, ठीक है, that nasal septum and it has a proper bifurcation, premaxilla, maxilla and palatine palatines. So whatever the points has been mentioned in your chordate के characteristics में, in your syllabus, so that points you have to have mentioned also in the characteristics. इसी में लिखो elementary canal वाले point में dentition, या ऐसे लिखो teeth are of several types, mainly देखो ये will not, this thing we will talk about. So teeth, the type of teeth are actually done on the various basis. First is on the basis of their attachment, on the basis of that attachment, जैसे कि ये अभी है आप लोगों के सिलेबस में डेंटाइन, आई विल शो दैट. एक होता है ये, दैट मींस जस्ट ऊपर ऐसे अटैच्ड है. फिर होता है ये, दैट मींस हाफ अटैच्ड एंड हाफ अनअटैच्ड. अटैचमेंट मतलब ये जो एनिमल वाला पोर्शन हम लोग देख रहे हैं, दैट एनिमल इज प्रॉपर फिक्स्ड इन दैट जॉ बोन्स और नॉट, that is a proper attachment. So on the basis of that, there are three types of dentition. The first is ecrodont, the second was plerodont, and the third one is that is thecodont. ठीक है, thecodont मतलब जैसे कि suppose that if this is a teeth or the animal portion which we can see, which is actually supplied or like fully embedded in your jaw bones. जैसे कि कभी if you have ever went to the dental डॉक्टर के पास कभी आप गए हो डेंटिस्ट के पास, so if someone is like अगर if I am trying to remove my teeth, है ना, it will be full of blood and everything, right? So that because my teeth is properly attached or fixed in my jaw bones with a rich network of blood supply, so that is called the thecodont. एक तो ये होता है on the basis of that type of attachment. Second होता है आपका how many types of teeth. Suppose that if you see some of the mammal or some of the animal, if you see जैसे हम अगर if I'll open my mouth, someone will open mouth, there are different types of teeth. इंसीजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है, मोलर है, ठीक. So that means they are the morphologically different. On the basis of that, on the basis of the morphology, the two types of teeth, homodont and heterodont. And the third type is teeth, that how many times the teeth can grow. So that is called that diphodont or monophodont. जैसे कि suppose that this is a permanent teeth, है ना, when the human child grows, उसके पहले milk teeth निकलते हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं, फिर ये if this teeth will break in, then it will not re again. So that means diphodont, di मतलब two, monophodont मतलब those animals in which the first teeth will be the permanent only, ठीक है. So that is divided around. Teeth are mainly of three types, teeth of various types such as hecodont, heterodont and diphodont
ठीक है. Next point, respiration always by lungs / pulmonary type. Respiration always by lungs / pulmonary type. / pulmonary type. Larynx contains, इसी में लिखना, larynx contains vocal cord. Larynx contains vocal cord. Next, closed circulatory system. Closed circulatory system with four chambered of heart, with four chambered heart and double circulation and double circulation. Full stop. Full stop. Only the left aortic arc, only the left aortic arc is present. So when we talk about the development of the circulatory system, so the four chambered heart is found in that aves and mammals. ठीक है. तो एव्स में आपका राइट वाला पाया जाता है और क्या कहते हैं मैमल्स में आपका लेफ्ट वाला. दैट इज द ओनली डिफरेंस. ठीक है. नेक्स्ट, renal portal system is absent. Renal portal system is absent. Full stop. RBCs are small, circular and non-nucleated. RBCs are small, circular and non-nucleated. ब्रैकेट में लिखो, except camels, and llama. Llama is your dwarf camels. Kind of, this is a type of a camel species. Llama, ILLAMA, llama, having nucleated RBCs. Having nucleated RBC. इसी में कंटिन्यू करेंगे बिकॉज आरबीसी आर प्लेइंग इन द रोल ऑफ होम्योथर्मी. दैट्स अ फुल स्टॉप. बॉडी टेम्परेचर रेगुलेटेड. बॉडी टेम्परेचर रेगुलेटेड. नेक्स्ट, kidneys are metanephric. Kidneys are metanephric. Full stop. Excretion is ureotelic. Excretion is ureotelic. Full stop. इसी में ureters open into urinary bladder. Because in the aves we have mentioned that urinary bladder are not found. That's why ureters जो pipe होती है आपकी, like this. Ureters open into urinary bladder. Urinary bladder. Next, brain is highly evolved. Brain is highly evolved. Both cerebrum and cerebellum. Both cerebrum and cerebellum. Large and convoluted. Large and convoluted. Next, इसी में 12 pairs of cranial nerves are present. 12 pairs of cranial nerves are present. Next point, dicondylic skull. Dicondylic skull with large cranium.
Dicondylic skull with a large cranium. Next point. The two cerebral hemispheres are joined by the two cerebral hemispheres are joined by a transverse band of nerve fiber, a transverse band of nerve fiber called called corpus callosum, called corpus callosum. फोर इसी में लिखना है. There are four solid optic lobes. There are four solid optic lobes which are small and called corpora quadrigemina and called corpora quadri मतलब four, quadrigemina. That means well developed eye system, optic lobes. ठीक है. Corpora quadrigemina. ब्रेन का थोड़ा सा elaborated करके लिखना इसलिए जरूरी है because mammals are evolved in every sense, right? So if they evolved in every sense, in the sense of predation, protection, right, survival, better speech recognition, overall everything is actually uh, correlating with the survival. ठीक है. So that means because of the well developed brain, they know the tactics of predators, they know how to protect themselves. So everything is about that. They have the better vision, right? We do not have the compound eyes, we see the human completely, we see the things completely. So because of everything like that. Next, senses are well developed. Eyes are protected by lids. Lids, lids. Middle ear cavity consists three bones, three ear ossicles. इसी में senses वाले में middle ear cavity with three ear ossicles, called malleus, incus and stapes. Malleus, malleus, malleus. Incus, incus, incus and stapes, stapes. With evolved hearing mechanism. Next point. Sexes are separate. Full stop. इसी में. Sexual dimorphism generally well marked. Full stop. Testes commonly placed in scrotum outside the abdomen. Testes commonly placed in scrotum outside the abdomen. Full stop. इसी में. Eggs are small with little yolk. Eggs are small because yolk gives the nourishment, and that nourishment is provided by that mammy. That is why eggs are small with little yolk and no shells. Shelling नहीं होती है इसमें, calcium. Eggs are small with no yolk and no shells. SHELLS, shells. Next, internal fertilization. Next point. Internal fertilization, comma,
viviparous, viviparous, giving birth to living young ones, giving birth to living, giving birth to living young ones directly, directly, comma, except, except prototherians or monotremes, except, comma, except prototherian or monotremes, prototherians or monotremes, monotremes. Next point. Okay, ठीक है. Last point, embryonic membrane, embryonic membranes are present which are, embryonic membranes are present which are amnion, chorion and allantois. Amnion, chorion and allantois. एग्जाम्पल लिखो, एक स्टार बना के पॉइंट लिखो. सीनोजॉइक एरा, वैसे तो एवोल्यूशन, ठीक है, सीनोजॉइक एरा. This is something you can write either in the introduction or the conclusion, wherever you want, but this is the important point. Cenozoic era is called the era of mammals, the era of mammals as during which the placental animals, during which the number of placental animals, during which the number of placental animals increased rapidly with high growth rate, and marsupials failed to compete with, highly evolved eutherians, and confined themselves in Australia and New Zealand region. Next write down classification of mammals. Next make the heading. समझ आ गया? Any doubt in the general characteristics? I don't think so. है ना? कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें नहीं पता है. चलो, ये साज था. Okay, thank you so much. चलो, write down classification of mammals. Classification of mammals. Write down according to the scientist. According to the scientist named Young in 1981, the mammalia group classified, the mammalians are classified mainly into two subclasses. देखो, आपका क्लास क्या होता है? क्लास होता है आपका मैमल,
ठीक है, क्लास क्या होता है आपका? मैमेलियन। ठीक, उसके बाद दिस इज योर सब क्लास। ठीक है, सब क्लास में आपका सब क्लास 1 था प्रोटोथीरियन। प्रोटोथीरियन, ठीक है, प्रोटोथीरियंस, and subclass 2 was Therians. So that means something, there is a word which means the Therians. ठीक है, because proto means we know that earlier one or the first one. Proto means आपका क्या होता है? First one. You know what? Therians मतलब क्या होता है? Beast, beastie animals. Why? Why they were considered the beastie or the beast animals? Because they were the best survivor. क्यों हो रहे थे बेस्ट सर्वाइवल? द फर्स्ट थिंग अबाउट, देयर आर ओनली टू थिंग. हाउ कैन यू से, सपोज दैट समथिंग यू हैव क्रिएटेड, राइट, द गॉड हैज क्रिएटेड समथिंग, हाउ कैन यू से दैट यू हैव क्रिएटेड दैट दिस इज गोइंग टू सर्वाइव और दिस इज गोइंग टू नॉट, है ना? सपोज दैट कोई बेबी हुआ, तो हाउ कैन यू से इफ द बेबी इज हेल्दी, राइट, उसकी साइज अच्छी है, उसका स्ट्रक्चर अच्छा है, लाइक न्यूली बॉर्न बेबी का, है ना, डॉक्टर सेड यस दैट पर्टिकुलर बेबी इज गोइंग टू सर्वाइव. And even after the survival, when it is having that good nutrition, food, सब कुछ अच्छे से ले रहा है, then it will be the good survival. So Therians इसलिए बोला गया because they were the big size. ठीक है, उनकी साइज अच्छी थी. So when we talk about, ये आपका पेपर सेकंड में evolution of horse, elephants and humans, है ना, ये आपका सेकंड पेपर में करेंगे. But if you talk about, when you talk about the evolution of humans, आप humans में देखोगे जो आपके पहले वाले humans थे, like आपके जो अफ्रीका में थे, जावा मानव, पीकिंग मानव, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, and these were the big one. They have that like big, आप देखो gorillas और chimpanzees which are called like closest to the humans, है ना, they have, humans have evolved from that, they're very close to, so they are in a big shape or sizes. ठीक है, but because of their cranial capacity they are not that best survival. और उनके बाद भी क्या हुआ? humans evolve हुआ. जैसे कि suppose that is this time, अगर think of gorilla या chimpanzee को हम लोग AI ML या सारी टेक्नोलॉजी चीजें पढ़ाएं, so that means they will also learn, है ना, and they will going to like lead to us. But humans में suppose that evolution का एक बहुत सुंदर, it's a very beautiful thing, even if we talk about the evolution, and even in the evolution humans में it's not a kind of, you know, technological discrimination, no, it is actually your evolutionary discrimination. जैसे कि suppose that if I'm telling you, not even I'm telling you, we know that the जो आपका newly born baby होता है, up till your 6 to 7 year, like 3 to 7 years के बीच में, this particular baby years of age के बीच में, it has that very high capacity to learn, because at that time the convolution or the meninges is forming in the brain. तो अगर suppose that इस age में if I'm teaching you to learn a new language, then it will be more difficult. But छोटे से बच्चे को if you're trying to teach more languages, then it will easily that particular kid will be going to learn. That means it is not, हम लोग बोलेंगे job and ये वो, this is not the technological discrimination but the evolution thing. So even in human में कल को like after 50 or 100 years, those human is going to evolve which are that technically upgraded, because that is the demand. Evolution is not necessarily always talking about that, ठीक है, because earlier time पे जब हम लोग बात करें तो temperature and this thing was major factor. जब humans have evolved in the sense of the agricultural, fire, stone making, वो बहुत basic सी चीजें हैं. Maybe अभी we are saying that these are the basic things, है ना, उनके लिए बहुत evolved चीजें थी. तो maybe after like 200 or 300 years ago, 300 years after, वो वाले जो evolution होंगे वो कहेंगे oh the use of mobile phone is one of the very easy. But if this time if we will teach the learn the like iPhone चलाना अगर हमने पेरेंट्स को सिखाएंगे तो maybe उनके लिए difficult होगा, है ना. बट आज की 200 या 300 या 500 जनरेशन की बात की चीजें इट विल बी वेरी इजी. जैसे आज हम लोग कह रहे हैं ओ एग्रीकल्चर इज वेरी इजी, फायर थिंग इज वेरी इजी, बट हमारे लिए वो इजी है बट उनके लिए वो डिफिकल्ट है. ठीक है, सो अल्टीमेटली ब्रेन इज दैट थिंग विच आर गोइंग टू गोइंग फॉर दैट बेस्ट सर्वाइवल स्पीसीज. ठीक है, सो ये आपका एक दिस इज आई वाज रीडिंग वन ऑफ द आर्टिकल विच वाज एक्चुअली वेरी गुड कंटेंट कंटेनिंग दैट एसे. और जहां तक है जब भी आप ऐसे का पेपर दोगे यू विल हैव दैट काइंड ऑफ कंटेंट टू राइट इट. ठीक है, तो थीरियंस मतलब होता है बीस्ट. व्हाई द बीस्ट? बिकॉज दे वर द बेस्ट सर्वाइवल. शाम दाम दंड भेद, no matter what, in any method they will be the best survival, because of one they are the big sizes, and because of the two they are the one of the big survival, and because of the second head उनका फीडिंग अच्छा था. predators they were very good predators. ठीक है, इसीलिए प्रोटोथीरियंस में when we talk about the order we talk about the monotremes. आप डकबिल प्लेटिपस देख लो, आप एकिडना देख लो, है ना, दे आर द स्मॉल कंपेयर टू यहाँ पे व्हेन वी टॉक अबाउट द थीरियंस. इसको फर्दर डिवाइड किया गया है ऑर्डर में मोनोट्रीम्स. द थीरियंस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, दैट इज योर मेटाथीरियन,
दैट इज मीन्स बीच वाला, एंड यूथेरियंस, दैट मीन्स यूथेरियंस मतलब ट्रू बीस्ट। तो जब सबसे पहले इवॉल्व हो रहे थे आपके सिनोजॉइकेरा में, सबसे पहले इवॉल्व द मोनोट्रीम्स व्हिच आर स्टिल लेइंग दैट एग्स, सो दे आर कंसीडर्ड क्लोज टू द रेप्टाइल्स, जैसे कि आपका डकबिल, प्लेटिपस एंड एकिडना, दे वर लेइंग द एग्स ओनली। ओविपेरस है, दे हैव द स्पाइंस, दे हैव द बीक्स, दे हैव क्लॉड लेग्स, है ना, वो सारी चीजें थी, सो दे आर मेकिंग इट क्लोज टू द रेप्टाइल्स, ठीक है, बट दे हैव द मैमी आल्सो। ऐसा तो फिर आप यू गाइस कैन आस्क मैम, तब तक कुछ क्लोज उधर ही था तो उधर ही क्यों नहीं रख दिए गए? बट व्हेन वी टॉक अबाउट द मैमी, मैमी इज योर मेमोरी ग्लैंड, मैमी का एक प्रॉपर वी विल टॉक अबाउट इट। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैमीज में, तो मोनोट्रीम्स हैव द मैमी, बट द मैमी डू नॉट हैव दैट एक्सटर्नल और स्किन ओपनिंग, बट दे डू हैव द मैमी, ठीक है। रेप्टाइल्स में कहीं भी, इन ओवरऑल रेप्टाइल्स इफ यू टॉक अबाउट, नो रेप्टाइल्स विल हैव द मैमी, that means even they lay egg or something like that, after the birth of the young ones they do not feed the milk, ठीक है। मोनोट्रीम्स, और ये वाला जो डिफरेंशिएशन किया गया मोनोट्रीम्स, मेटाथीरिया और प्रोटोथीम्स, है ना, लाइक प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया, एक्चुअली डिफरेंशिएशन आपका दिस इज नॉट ओनली बेसिस ऑफ द साइज और समथिंग। ऐसा तो यूथीरियंस में आपका बैट्स आते हैं, बैट्स की भी साइजेस छोटी होती है, माउसेस आते हैं, माउसेस की साइज भी छोटी होती है, बट एक्चुअली डेवलपमेंट यहाँ पे एक तो उनका स्ट्रक्चर था, एंड सेकेंड द डेवलपमेंट ऑफ द मैमी। तो प्रोटोथीरियंस और मोनोट्रीम्स में मैमी आर एक्चुअली वेरी एम्बेडेड इन द स्किन, metatherians में mammies are just opened, like but it is in the skin only, and eutherians में they have the proper opening of the mammy, so that is why they are called the properly developed mammals. After the monotreme, when the metatherians were starting developing, so they were the two, like they were also that big one, kangaroos are the big one, right, of course उनसे बड़े होते हैं, young ones भी लेकर रहते, but when they were laying the young ones, still they were not very good enough to just compete, they were not good enough. That is why they have developed with the marsupials bag, that is called pouch, marsupial bags, that even after the birth they will need a certain kind of assistant to grow further. Suppose that humans की बात करें, we have seen multiple cases कि किसी कपल ने या किसी मदर ने ह्यूमन बेबी को अबॉर्डमेंट छोड़ दिया है, क्या उसकी डेथ हो जाती है? नहीं, जस्ट बेसिक चीजें उसको मिलनी चाहिए, इट्स नॉट लाइक कि उसकी डेथ हो जाएगी, मतलब एक्सट्रीम केसेस की वी आर नॉट टॉकिंग, दैट मींस आफ्टर द बर्थ that particular human baby is able to survive no matter what. So in that metatherian and eutherian, so after the metatherian, when the eutherian is started developing, and after the development they do not require any kind of marsupial bag or pouches to develop more, so that means they competed with each other. Your south, जो आपका southern hemisphere में ना, that is actually your core of the evolution of the new animals, ठीक है। So metatherians were not very good with the competition with the eutherians. That is one of the reason they restricted themselves in the Australia and the New Zealand region. And because of course that we know the current scenario, there's a big ocean in between that. So eutherians were not also overlooked there कि वो नहीं गए उन्होंने नया, तो उनका वो रीजन हो गया, और ये क्या हो गया, eutherians has spread over all the diversities, ठीक है। eutherians में सिर्फ mammals नहीं आते, eutherians में आपके horses, cows, हम लोग वही पढ़ेंगे इसमें, different different of orders. Even whales are also coming into there. whales अपने babies को मिल्क फीड कराती है ना प्रॉपरली, आप किसी भी यूथेरियंस को देखोगे they will have that proper opening of mammy, that means developed mammy, that is why they are called that true theory, ठीक है। समझ आ गया ये वाला कॉन्सेप्ट एवरीवन? ओके चलो, यंग ने डिवाइड किया, राइट डाउन क्लास मैमेलिया, राइट डाउन सब क्लास प्रोटोथीरिया एंड थीरियंस, मेटाथीरिया यूथेरिया बांध लेते हैं, सिंपल, राइट डाउन प्रोटोथीरिया एंड थीरियंस, प्रोटोथीरिया एंड थीरियंस। पेज 2 की लिखना, प्रोटो मीन्स फर्स्ट एंड थीरियंस मीन्स बीस्ट, ऐसे करके लिख लो, यहाँ पे लिखना प्रोटो मीन्स फर्स्ट, दे वर ऑल्सो बीस्टी एनिमल्स, है ना, एंड थीरिया मीन्स बीस्ट, फर्दर डिवाइडेड इनटू ऑर्डर, स्लैश करके लिखो, मोनोट्रीम्स, मोनोट्रीम्स, यहाँ पे फर्दर क्लासिफिकेशन,
मेटाथीरिया एंड यूथीरिया। मेटाथीरिया के साथ मेटाथीरिया एंड यूथीरिया। ठीक है, यहाँ पे साथ में भी लिख सकते हैं मेटा मीन्स बिटवीन और आफ्टर। मेटा मीन्स, इसको सर्कल में कर लेना, इसको भी सर्कल में कर लेना। ये आपका ऑर्डर नहीं होता है। मेटाथीरिया इज योर इंफ्रा क्लास। अगेन आई टेल यू, बिटवीन और आफ्टर। आफ्टर मतलब प्रो के बाद में आए हैं। थीरिया मीन्स बीस्ट। थीरिया मीन्स बीस्ट। यू में भी नीचे से ऐसे क्लासिफिकेशन कर, जस्ट बाइफर्केट दिस टर्म। यू मीन्स ट्रू, थीरियस मीन्स बीस्ट। थीरियस मीन्स बीस्ट। ये लिखने के बाद बीस्ट। ठीक है, आफ्टर दैट मेक द हेडिंग प्रोटोथीरिया स्लैश मोनोट्रीम्स, बिकॉज प्रोटोथीरिया और मोनोट्रीम्स पे मल्टीपल टाइम आपका शॉर्ट नोट्स आए हुए हैं 10 मार्कर। एक्सटर्नल ओपनिंग और दैट थ्रू ओपनिंग, उसको बोलते हैं टीथ्स। इसमें जब लोग फर्दर ऑर्डर करेंगे ना यूथीरिया में, तो ऑर्डर आपका होता है जैसे इंसेक्टिवोरा, ठीक है, या फिर फ्लाइंग वाले होते हैं, इसको फर्दर ऑर्डर करते हैं। यूथीरिया और मेटाथीरिया आपके इंफ्रा क्लास है, ठीक है, राइट डाउन। प्रोटोथीरिया, they are the primitive mammals. They are the primitive mammals primitive mammals which show many characteristics like reptilians, such as a full stop reptilians as direct, इसी में लिखो कॉमा, as direct reptilian descendants, as direct reptilians descendant, मोनोट्रीम्स। अच्छा ट्रीम, मोनो, अच्छा ट्रीम का भी तो वर्ड मतलब है। मोनो मीन्स सिंगल, ट्रीम्स मतलब ट्रिमेटा मतलब ओपनिंग। जहां पे लिखा है ना प्रोटोथीरिया और मोनोट्रीम्स हेडिंग पे, जस्ट ब्रेक दिस वर्ड, ऐसे कर लो। मोनोट्रीम्स या पॉइंट फॉर्म में भी लिख सकते हो, इट्स कंप्लीटली फाइन। एक चीज तो आप ऑलरेडी ब्रेक कर ही चुके हो, है ना, एक्सप्लेन कर चुके हो। मोनो मीन्स सिंगल, ट्रिमेटा मीन्स, कौन सी ओपनिंग की बात कर रहे हैं हम ये? नो, वहां पे सिंगल ओपनिंग कैसे होगी ना। यहाँ पे अभी भी वी आर टॉकिंग अबाउट दैट क्लोका, ठीक है, क्लोका, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टार्ट ऑफ दैट एनिमल किंगडम, जब हमने प्रोटोजोआ पॉलीफेरा स्टार्ट किया था, हियर वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट एनएसआर ओपनिंग। तो दैट मींस ओपनिंग इज समथिंग रिलेटेड विद दैट डेवलपमेंट ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। तो क्लोका मींस रिप्रोडक्टिव और आपका एक्सक्रीटरी, वो ओपनिंग आपकी सिमिलर है। सिंगल ओपनिंग मतलब दे हैव द प्रेजेंस ऑफ क्लोका। क्लोका हमने कहाँ लिखा था? रेप्टाइल्स में लिखा था, ठीक है, दैट इज अ सिंगल ओपनिंग, राइट अराउंड। सेकंड नेक्स्ट पॉइंट, they are the only oviparous mammals which lay eggs. They are the only oviparous mammals which lay large yolky eggs, large yolky eggs. Next, the mammalian characters are, next, the mammalian characters are the presence of hair. Reptiles में hair नहीं थे, remember, the presence of epidermal hair,
the presence of epidermal hair and mammary glands but ब्रैकेट में लिखो but without teats or outer opening, outer skin level of opening. तो जैसे हमारी बॉडी में स्वेट सिक्रीशन होता है ना, स्वेट का देयर इज नॉट अ पर्टिकुलर पॉइंट, राइट? सो वैसे इनमें मिल्क सिक्रीशन होता है. समझ आ गया? दैट इज अ सिंपल थिंग. दैट मीन्स विदाउट प्रॉपर स्किन लेवल ऑफ ओपनिंग. फुल स्टॉप. which are later modified, which later are modified sudorific or sweat glands. Sudorific or sweat glands. Next. Presence of large T-shaped interclavicle. Presence of large T-shaped interclavicle. Broad shoulder because of the presence of mammary glands. T-shaped interclavicle. Next. Interclavicle. Next. Terrestrial habitat. Terrestrial habitat. Respiration is through lungs. इसी में respiration is through lungs. Next. Presence of diaphragm. Presence of diaphragm and four-chambered heart. Presence of diaphragm with four-chambered of heart, comma, having only left aortic arc. ये भी इसका mammalian character है, of course. Having only left aortic arc. Next. 7 cervical vertebra. 7 cervical vertebra. Next. Humerus is flat. Humerus is flat, having little developed olecron process. ब्रैकेट में लिखो अटैचमेंट ऑफ अल्ना. तो आपकी क्या होती है? ये आपकी ह्यूमरस है ना, सपोज दैट ये आपकी आर्म्स है, सो दिस इज योर ह्यूमरस एंड दिस इज यहाँ पे रेडियस एंड अल्ना. सो अल्ना का जो अटैचमेंट होता है व्हेन वी कवर द जॉइंट्स, दैट अटैचमेंट इज कॉल्ड द ओलेक्रॉन प्रोसेस थ्रू व्हिच द अल्ना इज अटैचिंग, बट दे डू हैव दैट वेरी स्मॉल, क्योंकि इनका क्लॉज की फॉर्म में डेवलपमेंट होता है. ठीक है, अल्ना एंड फ्लैट फीमर, हिंड लेंथ इसी में लिख लो, एंड फ्लैट फीमर with prominent trochanter process. With prominent trochanter process. So this is your ball or socket joint, right? So this is your ball or socket joints. जो आपके हिप्स की बोन्स होती है, वहां पे जो फीमर होती है, फीमर का जो अपर हेड होता है, इट इज योर लाइक सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. सो दैट काइंड ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड द ट्रोकैंटर प्रोसेस. ठीक है, ये भी आपका जॉइंट्स वो चैप्टर का है, बट स्टिल वी शुड, अदरवाइज यू नो व्हाट, सपोज दैट अगर आपका ये प्रोसेस ये पूछा गया मोनोट्रीम्स, सो एक्सेप्ट दैट सिंगल ओपनिंग और दैट डेवलपमेंट ऑफ द मैमी ग्लैंड, 3 to 4 पॉइंट्स के अलावा यू विल नॉट हैव एनीथिंग टू राइट. So at least you have, and these points are very specific with the monotremes only. ठीक है, अदरवाइज आपके पास बहुत कम कंटेंट होगा लिखने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट. अपर जॉ रिड्यूस्ड, into depressed beak,
into depressed beak in platypus, underline that, in platypus, and pointed rostrum, in echidna, in echidna. Next point. They have the single opening, bracket में लिखो, as the term monotremes meaning. They have the single opening, bracket में लिखो, as the term monotremes meaning. As cloaca, इसी में लिखो, full stop. Testes are abdominal. Testes का मतलब है simple, that male reproductive organ are not present outside of the body, like in human or other developed horses and everything. The testes are present inside of that abdominal cavity. So if something is present inside the abdominal cavity, that means the path for the reproductive process and excretory process will be the common. Okay? That is why it is having the cloaca. All of the mammals do not have, just they have. Okay? This is the main one of the characteristics. Okay? Testes are abdominal means do not open outside into the scrotum. That means do not open outside into the scrotum. Next, ureters open into urogenital. Ureters पता है ना? What is ureters? जैसे कि ये आपकी किडनी होती है. Yes, that is ureter. This is urethra, urinary bladder and ureter. ठीक है? Ureters open into urogenital and do not open into urinary bladder. लास्ट पॉइंट लिख लो. वैसे तो ये फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए था. Majorly confined to Australia and New Zealand region. Habitat ये फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए था, but my bad actually. Majorly confined to Australia and New Zealand region. Example. क्या है इसका एग्जाम्पल? स्पाइनी एंटीटर और एकिडना. इसके 3 नाम है, स्पाइनी एंटीटर / एकिडना / टाकाइग्लोसस. अच्छा, one more thing guys, I have seen one of the mistake in one of the copy, that's why ये आपके स्पाइनी एंटीटर होते हैं. ठीक है, ये है इसका स्ट्रक्चर. ठीक है, ये लार्ज होते हैं? नहीं, ये छोटे से होते हैं. The one thing I want to differentiate here, अनुष्का, ये स्पाइनी एंटीटर ही होते हैं, but definitely we have seen a kind of scaly anteater, जो एक एनिमल होता है जो ऐसे रोल हो जाता है. When the tiger or some big predators are playing with them, so it become rolled. वो अलग होता है, वो आपका मैमल नहीं होता, वो आपका रेप्टाइल्स होता है. ठीक है, वो भी आपका एंटीटर ही होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्केली एंटीटर. छोटू सा होता है and it become rolled because they have the very tough spine so that even the big predators cannot kill them. But ये आपका स्पाइनी एंटीटर होता है. And they are not big, they are not that much big, मतलब इतना छोटा भी नहीं होता, but बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो इतना बड़ा होगा. They are not that big. Otherwise ये बीच में भी आ सकते थे ना. ठीक है, इनकी साइज बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती है. Everyone, just clear it, okay? Right now, make the diagram also. Every point should have the diagram. स्पाइनी एंटीटर. और नेक्स्ट आपका होता है प्लेटिपस और डकबिल प्लेटिपस. सीधे देख लो, डकबिल प्लेटिपस. डकबिल
प्लेटिपस, ये आपकी बीक है ना, स्पाइनी है, मतलब पॉइंटेड है, और उसके पास आपकी प्रॉपर ऐसी करके बीक होती है, जैसे डक्स के पास होती है ना, लाइक दिस, दे हैव द प्रॉपर दिस. Next, metatherians. Next, make the heading metatherians slash marsupials. Simple लिखो metatherians. Metatherians. They are also known as marsupials. They are also known as marsupials as they contain a pouch-like structure in their body. A pouch-like structure in their body called marsupial. Called marsupial for growth of young ones after the birth. For growth and nourishment नहीं लिखो, हाँ ठीक है, growth of young ones after the birth as young ones are born in immature state. As young ones are born in immature state and develop in pouch slash marsupial slash marsupium on the abdomen of females. On the abdomen of females slash mothers. Next point. They are viviparous. They are viviparous. Next point. Body is covered with soft fur. Body is covered with soft fur. Body is covered with soft fur. Next. The marsupial or the bag-like structure is supported by the marsupial or bag-like structure is supported by two epipubic or marsupial bones. Two epipubic or marsupial bones. Next, brain size is comparatively smaller. Brain size is comparatively smaller from eutherians. Next, sternal ear slash pinna is well developed. Sternal ear slash pinna is well developed. Next, second and third toes are slender. Second and third toes are slender
and remain enclosed in the sheath of skin, remain enclosed in sheath of skin, sheath of skin. These two together, इसी में these two together are known as syndactylous digits. Syndactylous digits. Next, mammary glands are present. Mammary glands are present with having teats. With having teats. With they feed to young ones. With they feed to young ones. Next, anus and urogenital aperture. Next point, anus and urogenital aperture are separate but have common sphincter muscles, but have common sphincter muscles. Regulating, actually this is a regulating muscles. Next, they have two uteri and two vagina. They have two uteri, uteri. They have two uteri and two vagina. Next, testes are abdominal. Testes are abdominal. In males, full stop. The scrotal sacs, इसी में, the scrotal sac are in front of the penis. The scrotal sac are in front of the penis, which is often bifid, या bifid, which is often bifid. Next, forelimbs are shorter than the hind limbs. Forelimbs are shorter than the hind limbs. Next, choriovitelline type placenta. Choreo, that means all the amnion, chorion, ये सारी चीजें नहीं पाई जाती. Choriovitelline amnion नहीं पाई जाती है. Choriovitelline type of placenta. Choriovitelline type of placenta. Viviparous हमने लिख ही लिया है, right? Last point, write it down. Confined mainly to Australia or New Zealand region. Confined mainly to Australia and New Zealand region. Example क्या क्या है इसके? सबसे पहले तो मैक्रोपस स्लैश कंगारू. Example मैक्रोपस स्लैश kangaroos. नेक्स्ट, डाइडेल्फिस को ओप्सम भी बोलते हैं, अगर कहीं सुना होगा. ओप्सम. एक और छोटा सा ऑर्गेनिज्म, देयर इज वन मोर, दैट इज कॉल्ड कोला बियर. यस, कोला बियर इज आल्सो वन ऑफ योर मार्सुपियल्स. कोला बियर्स. एक और है डेंड्रोलैगस, सुना है? वैलाबी सुना है? डेंड्रोलैगस और वैलाबी.
कोलंबिया से थोड़ा सा बड़ा होता है वेलाबी, बट इट लुक लाइक द सेम. डेंड्रो लैगस स्लैश वेलाबी एक्सेट्रा एक्सेट्रा. How many points we have written? 2. नहीं, ऐसे ही दिखा दो मुझे. So, do we have enough to write that 10 marker question answer? लिख लोगे? मतलब whatever the point, देखो I have searched, I have actually see, इससे ज्यादा कंटेंट किधर भी नहीं है, ठीक है. सो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट you guys please do not apply कि जितना लिखा है उसका 1/10 याद रहेगा. यहाँ पे आपको पूरा याद रखना है, ठीक. So that then you can write that short note of 150 words. और फिर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखोगे, है ना, थोड़ा सा कंक्लूजन लिखोगे. when you start writing about the introduction, you will talk about the mammalia as a whole, है ना. तो थोड़ा बहुत अपनी when you are writing little bit in your language, of course थोड़ा सा elaborate होगा ही होगा, ठीक है. चलो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हेडिंग यूथीरिया. नेक्स्ट हेडिंग यूथीरिया. यूथीरिया, they are also called true mammals or या और नहीं, and placentalia. When you write about that placenta development, then we talk about the different types of placenta, because placenta is playing one of the very important role in the development of the embryo. Chorionic placenta, that means choriovitalinic placenta means इन सबका मतलब अलग होता है. That means the wall of the placenta, amnion, chorion and vitelline, so which is fully supplied with that fingers of the blood vessels. इसीलिए जब humans में baby deliver होता है, so it flows so much amount of blood, because complete placenta is actually supplied with the blood network. Why the blood network? Because during that development of the embryo, this is providing that nutrition or nourishment to the embryo. That is why well developed embryo is emerging from it, ठीक है. So placenta का itself में placenta हो गया, dentition हो गया, किडनी हो गई, है ना, इन सब का in itself is a big role. The development of heart हो गया, ठीक है. Placenta is playing a very important role. चलो write down. They are also called placentalia as they have an allantoic placenta. They have an allantoic placenta which nourishes the embryo. And full stop actually. The placenta establishes a connection between the uterus of the mother and developing embryo. Acha, listen one thing guys, which will be very specific point now that I'll mention in the eutheria. वैसे तो it's very rare that they will ask the eutherian, although once or twice they have been asked about the short notes of the eutherians. So if the short notes of the eutherian will be going to ask, whatever the point we have mentioned, the general characteristics, please write that. Exactly. देखो, जैसे कि when we have classified the prototheria, metatheria, eutheria, so this is all about the mammalia, ना? So mammalia में the eutheria are placing the largest group. सबसे बड़ा group तो eutheria है. So whatever the characteristic of mammalia we have mentioned, this is majorly about that eutheria. जो exception में है, हमने उनके साथ लिखा है exception to include the prototherian and metatherian. Otherwise आपको क्या करना है, सारे characteristics क्या लगते हैं mammals के. तो I don't think इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है लिखवाना, ठीक. Still write some point. They are higher viviparous. They are higher viviparous mammals. They are higher viviparous mammals giving birth to young ones directly.
which are like small adults, which are like small adults, comma, born after a long period of gestation, but born after a long period of gestation. Full stop. Next point, brain is highly developed. Brain is highly developed, comma, cerebral hemisphere, cerebral hemisphere have well developed, neopallial region have well developed, neo have well developed neopallial region. Next, the anus and urogenital apertures are separate. The anus and urogenital apertures are separate. Next, the uteri generally and vagina always are united into one. The uteri generally and vagina always are united into one. The ureters, next point, the ureters pass outside the genital duct. The ureters pass outside the genital duct in both sexes. In both sexes. इसी में लिख लो. Cloaca is generally absent. Cloaca is generally absent. Next point. ये डन टायरेशन वेंटाइलेशन तो लिख ही लेंगे ना. वेल डेवलप्ड टीथ आर प्रेजेंट, ये सब हो जाएगा ना. लास्ट पॉइंट एक और लिख लो. द tympanic bone is ring like. The tympanic bone is ring like. The tympanic bone is ring like and forms tympanic bulla. bulla. Next point around. Next point. The Eutherians further classified. The Eutherians further classified into different orders. Such as, such as order 1, edentata, edentata, edentata. Example, sloths and armadillo. Sloths and armadillo. Order 2, foliodota. Order 2, foliodota, DOTA.
एग्जाम्पल पैंगोलिन, सॉरी माय बट आई हैव सेड दैट रेप्टाइल्स है, बट ये पैंगोलिन इसको बोलते हैं, दैट इज स्केली एंट ईटर, पैंगोलिन और स्केली एंट ईटर, इसको मैनस भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मैनस, मैनस। ऑर्डर 3 इंसेक्टिवोरा, इंसेक्टिवोरा, hedgehog, hedgehog, example hedgehog. Order 4 lagomorpha, order 4 lagomorpha, example rabbit on the basis of the development of the dentition. Order 5 rodentia, जितनी भी माउस लाइक स्पीसीज होती है, रैट और माउस, रोडेंशिया, रैट, माउस, बीवर, बीवर होता है ना एक छोटा सा, एक मूवी है बीवर पे, इट्स वेरी क्यूट, आगे के जो yes they used to, they have the very proper use of their incisors, yeah that's a beaver, yeah they're very very cute also yeah that's a beaver, there's a very cute movie also on that beaver, what is the name of it? Next order chiroptera, this is something important, chiroptera because flying animals पे chiroptera, because flying animals पे अलग से आप लोग में आया है क्वेश्चन 10 मार्कर का chiroptera, so what are the flying mammals? Bat, write down, bat या flying fox, pteropus, next Eretodactyla, camel, Eretodactyla, camels, buffalo, sheep, goat, सब इसी में आते हैं, because they walk on the tips of their digits, ठीक है, unigulate बोलते हैं इनको, so they are they all are walking on the tips of their hoofs, किसके टिप पे वॉक करते हैं ये, ठीक है, राइट डाउन उसमें कैमल, बफेलो, काउ, शीप, गोट एक्सेट्रा। हॉर्स नहीं आएगा इसमें बिकॉज हॉर्स का डेवलपमेंट इज क्वाइट सेपरेट, व्हेन वी टॉक अबाउट द डेवलपमेंट एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स इन योर पेपर 2 वी टॉक अबाउट द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द रूट सिस्टम एंड दैट बॉडी एंड द लेग्स, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है पेरिसोडेक्टाइला, इसमें आपका हॉर्स आता है, पेरिसोडेक्टाइला इसमें आपका आता है हॉर्सेस, हॉर्सेस, वन हॉर्न राइनोसेरोस भी इसी में आएगा, डोंकी या एस भी इधर भी आएगा, because it was a type of horse in that evolution, they were look like the smaller in size, look like a ass or donkey. ठीक है। नेक्स्ट प्रोबोक्सीडिया, ये थोड़े से स्पेसिफिक हैं, दे हैव दैट इंटरनल पेनिस, प्रोबोक्सीडिया, somewhere it is not even mentioned in a separate order, प्रोबोक्सीडिया। इंडियन एलिफेंट, इंडियन मतलब लाइक नॉट इंडियन एलिफेंट, एलिफेंट है, लोक्सोडोंटा उसको बोलते हैं अफ्रीकन एलिफेंट को, तो दैट मींस एलिफेंट्स, एलिफेंट्स में टेस्टीज आउटसाइड ऑफ द बॉडी नहीं होती है। नेक्स्ट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, सिटेशिया, सिटेशिया इज कंप्लीटली कंसिस्टिंग योर एक्वाटिक मैमल्स, साइड करके लिख लेना, एक्वाटिक मैमल्स, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि स्पेसिफिक क्लास ऑर्डर के बारे में दे हैव नॉट आस्क्ड स्पेसिफिकली ऑर्डर बट दे हैव आस्क्ड अबाउट दैट एक्वाटिक मैमल्स, फ्लाइंग मैमल्स लाइक दैट, ठीक है। सिटेशिया एक्वाटिक मैमल्स, एग्जांपल यस whales, they also have that intra-abdominal testes, dolphin, next sirenia, इसके बाद इंपॉर्टेंट नहीं है एक्सेप्ट द प्राइमेट्स बिकॉज प्राइमेट्स आप में स्पेसिफिकली मेंशन है, साइरेनिया ऑर्डर
सिटेशिया के बाद साइरेनिया। सी काउ देखा है, दरियाई घोड़ा, हिप्पोकैम्पस, सी काउ। हाँ सॉरी, सी हिप्पोकैम्पस इज लाइक वाटर वाला जो सी काउ होता है, इट इज आल्सो हैव दैट वेरी बल्की से स्नाउट और समथिंग लाइक दैट। Sea cow is one of the only, not only I would say, but very fewest aquatic mammals who actually feed on, इसको sea cow इसलिए बोलते हैं because it only feeds on the herbivorous, इसीलिए इसका नाम है sea cow. Yes, they are also going to, बहुत ऐसे मल्टी, वैसे बिल्कुल, हाँ उसका क्या तो कॉमन नेम है, बहुत बहुत ऐसा ब्लर्ड से एनिमल्स होते हैं, दे आर नॉट वेरी स्पेसिफिक बॉडी शेप और समथिंग लाइक दैट. sea cow. नेक्स्ट ऑर्डर कार्निवोरा, इसमें आपकी कैट फैमिली और डॉग फैमिलीज आती है, ठीक है. कार्निवोरा एग्जाम्पल, कैट फैमिली, कैट फैमिली बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ डेंटाइन्स. लास्ट आपका ऑर्डर क्या है, प्राइमेट्स. ह्यूमंस आर आल्सो इंक्लूडेड इन द प्राइमेट्स, दैट इज व्हाई ह्यूमन आर कॉल्ड क्लोज टू द चिंपैंजीज. प्राइमेट्स तो लिखो मंकीज, लीमर्स, एप्स, मैन या ह्यूमन. देखो नेक्स्ट मेक द हेडिंग, नेक्स्ट मेक द हेडिंग फ्लाइंग मैमल्स. नेक्स्ट मेक द हेडिंग. अच्छा एक साइंटिस्ट थे हु क्लासिफाइड द द ऑर्डर द क्लास, आपका सब क्लास यूथेरिया, दे हैव डिवाइडेड द सब क्लास इनटू 25 ऑर्डर्स. बट आई एम टेलिंग यू, ये मैंने इसलिए मेंशन किया सो दैट यू गाइस विल हैव दैट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट एक्वाटिक, फ्लाइंग एंड सच मैमल्स आर अलग, डिफरेंट डिफरेंट, बट कभी भी दैट दे विल नेवर एवर गोइंग टू आस्क दैट ऑर्डर्स, ठीक है. जस्ट आपको मेंशन करने के लिए कि एक्वाटिक मैमल्स ये हैं और वो, दैट्स इट. आई डोंट फ्लाइंग मैमल्स, फ्लाइंग मैमल्स. ऑर्डर कायरोप्टेरा, ऑर्डर कायरोप्टेरा. वैसे तो आप कायरोप्टेरा लिखते हो, बट जब 25 ऑर्डर्स करते हो तो इसमें आप दो ऑर्डर्स लिखते हो, डर्मोप्टेरा एंड कायरोप्टेरा, ठीक है. 13 ऑर्डर में आप नहीं लिखते हो. ऑर्डर कायरोप्टेरा इंक्लूड्स बैट्स, बैट्स which are the only true flying mammals, ना only मत लिखना, which are the true flying mammals, which are the true flying mammals. इसी में पॉइंट आगे लिखो. In the Simpson classification, in the Simpson, SIMPSON, in the Simpson classification, the other order, the other order named Dermoptera, Dermoptera, Dermo means skin, Dermis means skin, Ptera means wings, Pteron मतलब wings, ब्रैकेट में लिख लेना. Dermis means skin, Pteron मतलब wings, PTERN, wings. Also evolve as a separate line form, as a separate line from the primitive insectivorous, primitive insectivorous during Eocene period, during Eocene period. They present mainly in Malay archipelago, in Malay archipelago, Philippines, ये डर्माप्टेरा के बारे में लिख रहे हैं, Philippines and East Indies,
They are generally herbivorous. They are generally herbivorous, comma. Size is comparatively smaller, like squirrel. Size is comparatively smaller, like squirrel, comma. Lower incisors, lower incisors are combed, are combed, comma. Brain is primitive. Brain is primitive, and the optic lobes and the optic lobes are not covered by cerebellum, are not covered by cerebellum. Presence of broad folds of hairy skin. Presence of broad folds of hairy skin. Standing between the legs. Standing between the legs and the tail and onto the tail. With the help, they glide. They are not actually true mammals. Okay. With the help, they glide, like jump like from one area. Gliding is also found in the monkey, but monkey में gliding है because of their good hold on of the forelimbs and the hind limbs, right? They do not have any skin or something like that. ये जो आपके flying squirrel देखिए छोटी सी होती हैं, right? They also do the gliding. They do not fly. Unlike your bats, bats आपके proper fly करते हैं. They are not flying. Dermoptera are not the flying mammals, but they do have the gliding movement which shows like appears like this. ठीक है? With the help of they glide. Example: flying lemur, lemur, flying lemur and flying squirrel. Flying lemur and flying squirrel. Next, Chiroptera. Chiroptera, Chiroptera, Chiroptera. ब्रैकेट में लिखो CHIR. कायर मतलब हैंड बॉन्ड्स, हैंड बॉन्ड्स. एंड टेरान मतलब विंग्स, एंड टेरान मतलब विंग्स. They are the only true flying mammals. They are the only true flying mammals who mastered the true flight, who mastered the true flight, mastered, mastered, mastered the true flight, and compete very well with the birds, and compete very well with the birds as specific evolutionary development lines, as specific evolutionary development. Full stop. Their forelimbs are modified into wings. Their forelimbs are modified into wings or patagia, Patagia, or patagia. As the forelimbs bone elongates, इसी में as the forelimbs bones elongates with all the fingers, with all the fingers except the pollex finger,
with all the fingers except the pollex, Pollex, pollex finger, which support the wing membrane, wing membrane, and runs between the forelimb and hind limb, and runs between the forelimb and hind limb. Next, an interfemoral femur के पास, an interfemoral FEMORAL femoral membrane is present between the femur which is supported by cartilaginous calyx, CALCAX, which is supported by cartilaginous calcaris of the ankles. Next point. A short tail is often included in the interfemoral membrane. Next point. The first digit of forelimbs is small. The first digit of the forelimb is small, and free from the wings, and bears the claws, CLAWS. इसी पॉइंट में कंटिन्यू करेंगे. द फुट और हाइंड लिम्ब हैज 5 clawed digits. 5 clawed digits by which they hang upside down, to a tree branch or perch, while sleeping during day. Next, wings/patagia are membranous, leathery extension of skin. Next point. Wings/patagia are membranous, leathery extension of skin, along the two sides of the body, Full stop. They are supported by greatly elongated forearms and forefingers. They are supported by greatly elongated forearms and forefingers. ब्रैकेट में लिखो second to fifth. Next point. All are nocturnal. First off, they have a highly developed sonar or echo apparatus.
They have highly developed sonar or echo apparatus. Echo apparatus. Full stop. Next. Their vocal cords. Next point. Their vocal cords produces ultrasonic sounds. Ultrasonic sounds which are highly sensitive with highly sensitive ears. With highly sensitive ears. Next. Bats may be frugivorous, मतलब fruit eating. Bats may be frugivorous, 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 comma, insectivorous, or sanguivorous, or sanguivorous. ब्लड सकिंग एनिमल्स, कोई भी एनिमल जो ब्लड पे फीड करता है उसको सैंग्विवोरस कहते हैं. सैंग्विवोरस, SANGUINIVOROUS. ठीक है. एग्जाम्पल टेरोपस, TEROPUS, टेरोपस. ब्रैट में लिखो फ्रूट ईटिंग. टेरोपस फ्रूट ईटिंग. डेस्मोडस, DESMODUS, डेस्मोडस. ब्रैकेट में सैंग्विवोरस और ब्लड फीडिंग, जो भी लिखना लिख लो. Sanguivorous or blood feeding, also called vampire bat. Also called vampire bat. देखो, there is a one more thing which जिस पे क्वेश्चन है but very rare, very rare. So that is your aquatic mammals. ठीक है. Aquatic mammals में I will give the PDF. ये ऐसे ही characteristics आपके हैं, that skin has that blubber something like that. ठीक है. Nothing is conceptual. टाइम है ना अभी. नेक्स्ट टॉपिक आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. ओके फाइन. देखो, ये आपका है डेंटेशन. डेंटेशन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. दे हैव बीन आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स. ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है मतलब, बट है इंपॉर्टेंट, मतलब आपको कवर, यू हैव टू कवर इट लाइक दैट. ओके. करना क्या है आप लोगों को इसमें. देखो, वी नो दैट व्हाट इज द डेंटेशन. सपोज दैट डेंटेशन मैमल आएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द व्हाट इज डेंटेशन. डेंटेशन इज सिंपली द अरेंजमेंट ऑफ द टूल इन द बकल कैविटी ऑफ द मैमल. ठीक है. यहाँ पे वी आर राइटिंग अबाउट द डेंटेशन मैमल्स. ठीक है. बट वी हैव टू शो मल्टीपल थिंग्स. The hard and usually pointed structure connected to the jaw bones to the buccal cavity of the vertebrates are known as teeth. सबसे पहले आप teeth को define कर सकते हो. ये सिंपल, ये थोड़ा ज्यादा because of course it is a PDF. तो हम लोग जब notes बनाते हैं PDF लिखते हैं तो elaborate लिखते हैं. ठीक है. The structure, kind, number, arrangement of the teeth are collectively known as dentation. That means attachment pattern or everything of the teeth is called the dentation. ठीक है. Although teeth are found among the fishes, amphibians and reptiles and also are also known to have been present in ancestral birds, but they are the most highly specialized in mammals. क्या कनेक्ट किया. डेंटेशन की डेफिनेशन लिखी और mammals. या फिर we can also connect like that mammals have that diverse pattern of that habitat and on the basis of their different kind of fooding habitat, so they have the different kind of mammals. आप इंट्रोडक्शन ऐसे लिख के फर्दर आप इसको बॉडी को कनेक्ट कर सकते हो. The arrangement of the teeth in the upper and the lower jaws, mainly on the premaxilla, maxilla and dentary bones, is called the dent. समझ आ गया. इतना काफी है लिखने के लिए. ठीक है. इंट्रोडक्शन में कंसाइज फॉर्म में इसका आप इंट्रोडक्शन अपने अकॉर्डिंग लिख लोगे. Origin and structure of teeth in mammals. The teeth has evolved from the denticles, which are released from that armor near the margins of the mouth as ossification in that integument.
इसके पहले why we haven't covered that teeth that much, क्योंकि the endoskeleton is not even the ossified. जब endoskeleton ossified नहीं है, which is important, पहले तो body support होना important है ना. Can we say that annelida, suppose that, या फिर we talk about that orthopoda, or better we talk about Chordate fishes, है ना. Sorry, Chordate आपकी starfishes, वहां पे they have started developing the type of endoskeleton. Do we have any sign of that teeth development? No. That means even if we chalo talk about that fishes आपकी proper chordate में आ जाती है. Fishes में we have also covered that chordate teeth and ostrich teeth. But did we see that fishes have that proper teeth? No. So first of all, when the ossification was started, the first thing which was required to support the body, that was the endoskeleton. उसके बाद accessory आपका significance होगा the development of the teeth. ठीक है, तो ये इसमें बताया गया है. The crown is अब इसमें क्या किया गया है, what we have done in that, कि ये जो आपका teeth का proper, because sometimes the structure of the teeth also has been asked. So teeth के structure में we have also asked the crowns में क्या होता है, is a support of part of the tooth situated above the root. ठीक है, उसके बाद root में क्या है, the tooth encloses the pulp cavity, contains blood vessels, nerves and something like that. ये आपका एक proper structure of tooth का है. ठीक है, tomorrow आप लोगों को ये PDF देंगे, PDF में it is properly mentioned. अगर कुछ नहीं mention होगा तो I'll dictate it, आप लोग PDF लेना और उस पे आप mention कर लेना. ठीक. 3 kinds of tissues in the typical tooth. They are the enamel, dentine and cement. The 3 kinds of tissues in that teeth are the enamel, dentine and cement. इसके बाद we have defined the enamel, we have defined the dentine and we have defined the cement. Cement क्या होती है? The root of the tooth is covered by a thin layer that is called cement. Sometimes we'll see a little bit नीचे से एक plaque जैसा ही layer जम जाती है. ठीक है? That is called the cementum, which is helping in the proper attachment of the tooth. ये हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टूथ के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, उसके बाद टीथ इन वर्टिब्रा. ओके, यहाँ से यहाँ तक आप लोग देख लेना अपने अकॉर्डिंग. यहाँ तक वॉट एवर अप टिल हियर, दिस इज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चन. इफ दे आर आस्किंग स्पेसिफिकली अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, only then you have to write the enamel, crown and something like that. But majority of the time they will asking about the type of dentation. ठीक है, type of dentation बहुत सारे बेसिस पर है. क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द शेप एंड साइज. शेप एंड साइज मतलब होमोडोंट और हेटेरोडोंट. होमोडोंट मतलब सारे आपके सिमिलर दिख रहे हैं, जैसे कि होमो मतलब ऑल द सेम. ठीक है, homodont or isodont type of teeth is a condition where all the teeth are alike in their shape and size. Example आपका tooth vein. Example से justify करना है. Some of the aquatic mammals, because they do not need to develop that much, so they have that homodont teeth. ठीक है, उसका example है आपका. उसके बाद pinnipedians show a tendency towards that homodont condition. Heterodonts मतलब different types of. जैसे ही आप heterodont लिखोगे, ठीक है, if you want यहाँ पे इसके just बाद आप incisor canine वाला भी mention कर सकते हो. यहाँ पे simple mention कर दो. Heterodont condition is a usual feature in mammals, that is teeth are distinguished according to the shape, size, function. They are differentiated into several types. Incisors, canine, premolar and molar. Mention करना है different types of teeth. ये आपको बहुत सारे mammals में सब में पाई जाती है. Example आप किसी में लिख सकते हो. उसके बाद attachment of the teeth. This is something I was talking about. देखो, on the basis of the attachment of teeth, ये PDF आज मैं दे दूंगी, आज अपलोड करा दूंगी, कल आप लोग पढ़ लेना, या whenever you read it just tell me. ये देखो एक्रोडोंट लिखा है. एक्रोडोंट में ये आपका क्या है? जॉ बोन्स है. जॉ बोन्स के ऊपर इट इज सिंपली लाइक प्लेस्ड, इट इज नॉट अटैचिंग इटसेल्फ. किधर भी ये अटैच नहीं है. सो फर्स्ट आपका होता है एक्रोडोंट. इन द मोस्ट वर्टिब्रेट्स इन व्हिच द टीथ आर अटैच्ड टू द फ्री सरफेस, जैसे कि मान लो ये जॉ बोन है और इसके ऊपर टीथ रखा है, दैट इज एक्रोडोंट. प्लेरोडोंट में क्या होता है? ये आपका एक्रोडोंट हो गया, ये आपका प्लेरोडोंट पे एट द एज ऑफ दैट अटैच, एट द एज ऑफ द जॉ बोन्स और द योर लोअर जॉ बोन्स या अपर जॉ बोन्स, यहाँ पे हाफ अटैचमेंट है, नॉट प्रॉपर्ली बट द हाफ अटैच. देखो ये वाला यहाँ पे, ये भी अभी भी यहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रॉपर सप्लाई नहीं है. ये आपकी जॉ बोन्स है, ये आपका टीथ है. ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है? अच्छा, कैलोइड्स और